Assalamu alaikum, grade 7. How are you? Who am I? Your English teacher. What's my name? Faiza Nadeem. And what am I going to teach you today? I am not going to tell you this until I ask whether all of you are hale and hearty. All of you are healthy and fine. Are you enjoying your life? Eating out, hanging out? But among all these activities of life, keep this in your mind that your academics are essential. पढ़ना बहुत important है, ठीक है? और उससे ज़्यादा important है सलाद की हिफाजत करना और अपने अम्मी अब्बू के साथ तमीज़ से पेश आना। चलो, आज का लेसन शुरू करते हैं। Let's start our lesson without much ado. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिटिया, What is the board telling you? The board is telling you to take your Oxford Progressive Reader out, right? And when you will take your Oxford Progressive Reader out, you have to open unit number 8. And the title of this unit is Family Feelings. And then, what you have to do? You have to take page number 211 to 216 out. जो कॉम्प्रीहेंशन है उसका नाम है डियर ऑली। ये क्या कॉम्प्रीहेंशन है बेटा? ये कॉम्प्रीहेंशन है दो बहन भाइयों के बारे में, एक बहन और एक भाई, ठीक है? जो बड़ा भाई होता है मैट, वो ऑली से काफी बड़ा होता है और वो एक पियानिस्ट बनना चाहता है बड़ा होके, लेकिन देन उसने रवांडा और अफ्रीका के शेल्टर होम्स के बारे में पढ़ा और वो इतना सैड हुआ, उसके हार्ट पे इतना इफेक्ट हुआ कि वो अपना तमाम एम्बिशन छोड़ के अफ्रीका चला गया इन ऑर्डर टू हेल्प दोज पीपल हु वर लिविंग इन द शेल्टर होम्स। और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक बच्चा था गेहमार, ठीक है? गेहमार बहुत ही क्वाइट और बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा था, बिल्कुल नहीं बोलता था। मैट को उससे बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन वो बच्चा गायब हुआ, मैट उसको ढूंढने निकला तो उसका पाँव एक बॉम्ब के ऊपर, जो छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं ना मट्टी के अंदर छुपे हुए, उस पे पड़ गया और उससे उसकी एक टांग लूज हो गई। उसके बाद उसके एक आर्टिफिशियल लेग लगी जिसका नाम उसने पेग या पेगी रखा था। और फिर उसने अपनी बहन को एक लेटर लिखा डियर ऑली के नाम से, जिसके बैकग्राउंड पे, जिसके नाम पे ये कॉम्प्रीहेंशन सेट है। और फिर उसने अपनी बहन को अपनी सारी सिचुएशन बताई। फिर वो लोग वहाँ से यूरोप से, इंग्लैंड से रवांडा पहुँचे उसको पिक करने के लिए और वहाँ से वो दोबारा इंग्लैंड आया अपने घर पे। There he went into complete despair because he was finding it very difficult to cope up, he was finding it very difficult to recover, और उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था रिकवर करना, कोप करना। लेकिन वहाँ पर सोलोज आई। सोलोज क्या होती हैं? छोटी छोटी चिड़ियाँ। ये चिड़ियाँ हर साल अफ्रीका से इंग्लैंड फ्लाई करके आती हैं यूरोप में, वहाँ पे घर बनाती हैं और फिर जब यूरोप में ऑटम होता है तो दे फ्लाई बैक टू अफ्रीका, ठीक है? और उसके बाद यूजुअली बहुत गुड लक होती है कि सोलो अगर एक घर पसंद कर ले, एक जगह पसंद कर ले, तो वो हर साल वहीं अपना नेस्ट बनाती है। तो ऑली का भी एक स्पेसिफिक सोलो होता है जिसका नाम उन्होंने हीरो लिखा होता है और हीरो के गर्दन पे एक स्ट्रिप होती है, इससे उसको वो पहचान लेते हैं। बाकी सोलोस की गर्दन पे नहीं थी। इस साल हीरो नेस्ट नहीं करता, वो बहुत अपसेट होते हैं। लेकिन जो एक्चुअली सोलो नेस्ट करती है, एंड में वो डिस्कवर करते हैं कि दैट सोलो डिड नॉट हैव वन लेग, और उसने फिर मैट को वो होप दी जो वो लूज कर चुका था। और यूं मैट मेड अप हिज माइंड अगेन टू गो बैक टू वेयर ही हैड कम फ्रॉम, टू स्टार्ट डूइंग व्हाट ही हैड लेफ्ट, टू स्टेप इनटू द लाइफ अगेन।
बहन भाइयों का बहुत खूबसूरत रिश्ता इस कॉम्प्रिहेंशन में डिस्क्राइब्ड है. पढ़ोगे, बहुत आसान इंग्लिश है, उर्दू में मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया. एंड व्हेन यू विल रीड द कॉम्प्रिहेंशन बिटो, you will understand what is described over there. You will not only understand, but at certain times you can relate to it as well. Let's move on to the question answers. Reading for interpretation. The first question for reading for interpretation is, in his letter to his sister, why do you think Matt refers to his artificial leg as pig rather than, for example, my new leg? वो अपनी लेग को पेग क्यों कहता है, माई न्यू लेग क्यों नहीं कहता? ठीक है, बिकॉज पेग मीन्स वुड. जब शुरू में आर्टिफिशियल लेग्स इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो वुड की बनी हुई थी, दे वर वुडन लेग्स. उसके अलावा पेग क्या होता है बेटा? वो आपकी नेल होती है, ठीक है, जो आप हैमर करते हो. तो वो इसलिए उस तरह से उसको रेफर कर रहा था क्योंकि दैट पेग वाज हैमर्ड like a nail in his leg. That's why he was referring that specific new leg of his as pig. What do you think is the significance of the picture which Gehmeyer had drawn for Matt? अब Gehmeyer वो बहुत ही क्वाइट इंट्रोवर्ट बच्चा है जिसकी वजह से मैट ने अपनी एक टांग गंवाई. और जब वो हॉस्पिटल में था तो उसने मैट को, जब मैट हॉस्पिटल में था तो Gehmeyer ने मैट को एक पिक्चर भेजी जिसके अंदर 2 giraffes थे और they giraffes were facing each other. To Matt it seemed that they were kissing each other. ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंस थी? सिग्निफिकेंस ये थी कि the 2 giraffes actually represented Matt and Gehmeyer. ठीक है, and he wanted to show his love to Matt. And they wanted to show his love to Matt, to show that he loved him dearly and to show that he was thankful to whatever Matt has done for him. That bomb could have had taken Gehmeyer's life, but Matt has given up his leg to save Gehmeyer's life. So that picture actually showed Gehmeyer's thankfulness and love for Matt. Let's move on to the third question. Third question. Why was the walk towards his sister the most triumphant walk of his life for Matt? जब हॉस्पिटल में ऑली और उसकी फैमिली मैट को पिक करने के लिए आते हैं, मैट को ले जाने के लिए आते हैं, तो मैट वॉक्ड टुवर्ड्स देम विदाउट क्रचेस. Since Matt was walking towards them without crutches on his own, with his artificial leg for the first time, that was the most triumphant walk. ठीक है, on his 2 legs, one artificial and one real. So that was the most triumphant walk for Matt. फिर rephrase कर दूं आपको आंसर, सही से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दूं. The walk towards his sister was the most triumphant walk of his life for Matt because he was walking without crutches on his own. He was walking on his own 2 legs, one artificial, one real, and he did not take hold of anything, did not take help. That is why that was the most triumphant walk of his life. How did Matt clown his way through his return home? Why did he behave in this way? उसने क्लाउन क्या किया था? उसने डार्क ह्यूमर यूज किया था. उसने कहा कि मीट माय डियर पेगी, ठीक है, अ लेग एंड, ठीक है. उसने बहुत ज्यादा ये डार्क ह्यूमर यूज किया था बिकॉज ही वांटेड टू फॉरगेट हिज ट्रॉमा, ही वांटेड टू फॉरगेट हिज problem. That is why he had used dark humor.
इसको आप फ्रेज आउट इस तरह से करोगे कि मैट क्लाउंड हिज वे थ्रू हिज रिटर्न होम बिकॉज he wanted to forget his shortcoming. ठीक है, he did not want to keep on remembering that he had lost one of his legs. That is why he behaved in that specific manner. Right? I've given you the answer. Next is, what ways was life more difficult for Matt when he came out of hospital? इसको आप कैसे लिखोगे? Life was more difficult for Matt when he came out of the hospital because in hospital everyone was amputed. Everyone missed a leg or a foot, but outside everyone was normal with complete organs. ठीक है? Come out of hospital because in hospital everyone was injured. They were missing one leg or hands, but outside everyone was normal with complete organs. ठीक है? That's why it was more difficult for Matt when he came out of the hospital. How did the psychological effect of his accident began to affect Matt? Answer यूं phrase out करोगे. The psychological effect of his accident began to affect Matt as he started to lose hope. He became depressed because exercise was difficult. Coming and going to the hospital as an outpatient was difficult. So he was in complete despair. ठीक है? होप होती है उम्मीद और डिस्पेयर होती है ना उम्मीदी. He did not ever think that he would be able to return back to his normal life once while he was being treated at his home. Why did Matt find his sister the easiest person to be with? Matt found his sister the easiest person to be with because she never reminded him of his shortcoming. She never spoke about his leg. She acted normal with him. She did not discuss any abnormality with her brother. That is why he was most comfortable with his sister. Why was Olly disappointed when the swallows started to return? Why was Olly disappointed when swallows started to return? She was waiting for Hero, but you are going to phrase the answer out in this manner that Olly was disappointed when swallows started to return because she was waiting for Hero who did not come back. Hero was their pet swallow, right? Not pet, but Hero used to nest in their garage almost always whenever the swallows would come to England for roosting in the summers. So Hero did not return, and that actually made Olly very desperate, very disappointed and very sad. Let's move on to question number 9. In what ways did the return of swallows help Matt's recovery? For once in his life, he had forgotten his misery. He was actually sitting in their secret hide looking for the swallows. ठीक है, तो आप अपना आंसर इस तरह से phrase out करेंगे that the return of swallows helped Matt's recovery as he completely forgot his misery.
he was hiding in their secret hide to wait for hero or any other swallow to nest, and this kept him occupied so much so that he forgot his injury. Right? In what ways did the male swallow in the garage help to make Matt's mind about his future? इस आंसर को आप ऐसे लिखोगे बेटा कि the male swallow in the garage helped Matt make up his mind about his future when he saw that the swallow was also one-legged. The swallow also had one leg. So he thought, if a bird could keep up with his life, why can't he? This gave him hope about his future. This gave him a will to survive, and thus he forgot about his misery and decided to go back to Africa and start from zero. Next आपका आता है writing task. राइटिंग टास्क का पहला क्वेश्चन ये है कि आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं मैट और उसकी सिस्टर के रिलेशनशिप में, जिसमें आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट जो इलिस्ट्रेट करेगा एग्जाम्पल्स कि किस तरह का रिलेशनशिप था दोनों का, और आप कंपेयर करें उनके रिलेशनशिप से किसी और बहन भाई का रिलेशनशिप जिनको आपने देखा है. तो सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं ब्रीफली कि व्हाट वाज मैट एंड ऑलीज रिलेशनशिप. सबसे जो आपका पहला पैराग्राफ होगा आप उसमें लिखेंगे मैट एंड ऑली shared a strong bond, right? They would share each and everything with each other. They would be there for good and for worse, for each other ever and ever. When Matt was in trouble, Olly was the person he was writing to. I'm writing the helping words, ठीक है? आप मेरा साथ साथ सुनो, साथ साथ फ्रेज आउट करो. शुरू की सेंटेंसेस कंप्लीट लिखी हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस लिख रही हूँ. Matt and Olly shared a strong bond. They would share each and everything with each other. They would be there for each other, even in their worst and even in their best. Right? They would talk to each other whenever they would be in trouble. Olly was the first person Matt was writing to after his accident, right? After he lost his leg. And she was the first person he trusted and shared his feelings, right? This will be your first paragraph. Your second paragraph will be a few examples from the text. Like when Matt came back, he was in serious despair. He did not want to talk to anybody because everybody would remind him of his loss, because everybody would show sympathy and he did not want that. So in complete despair, in complete sadness, Olly was the only person he was comfortable in talking to. And when Olly showed him the way to forget his problems, the secret hideout where he would sit and watch swallows coming over and flying out, roost and nest, he completely forgot his misery. This was the relationship between Olly and Matt. Now, what my suggestion is, if you have a sister, write your relationship with your sister. Your third paragraph है आपका comparison of your relationship with your sister and Olly's relationship with her brother.
How are you going to write that? You are going to write that by saying that my sister and I share the same bond. She is there whenever I need her. She is my partner in crime. And you can write, the Bitto can write my brother and I, and he is there whenever I need him, and he is my partner in crime. He is the one to console me whenever I am in grief. He or she is the one to help me in my academics whenever I am stuck at one question. He or she would help me out, solve the problems, and thus not only serves as a sibling but a mentor, right? आपके 3 different paragraphs, 3 different point plan के साथ on the board. I've given you verbally. You can write this and add more. Let's move on to the second writing task. Imagine you are Matt. Write a letter to Olly after a month of your return to Rwanda. किस तरह से आपने लेटर शुरू करना है? बोर्ड की ये साइड मैंने आपके लिए छोड़ी है, साइड बाय साइड लिख देती हूँ आपको. आप यूँ लिखेंगे डियर ऑली सिंस यू आर मैट, ठीक है? यू विल राइट डियर ऑली and you will start, I hope the swallows will come back and roost in our garage again. और उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आप लिखोगे as I came back, life was as I had left it. Life was as I had left it over there. ठीक है? I found grammar, but he had turned into a more cheerful person. He is able to share his feelings now. It is a little difficult for me to cope with Peggy, but she has become more helpful over the period of time, right? और उसके बाद if you want to share one of your experience in Rwanda, like there were new people who had been the victims, the battle victims, and we were very busy helping them out, sorting them out, तो वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है? victims और उनकी treatments, victims, उनकी treatments, ये सब कुछ आप लिख सकते हो. और इसको आप खत्म कैसे करोगे? Yours lovingly, Matt. ठीक है? ये आपका राइटिंग स्किल्स का पार्ट बी हो गया. अब बोर्ड के इस साइड पे आपको वोकैबुलरी नजर आ रही है. वोकैबुलरी के 1, 2, 3, 4 टास्क थे, ठीक है? टास्क्स आर एलैबोरेटली डिस्क्राइब्ड इन योर बुक, सो आई डिड नॉट कॉपी एंड पेस्ट देम ओवर देयर. लेकिन मैंने उनके जो सवाल आपसे पूछे गए हैं वो जरूर लिखे हैं. आपका जो वोकैबुलरी टास्क 1 था वो आपसे ये कह रहा था कि हॉट डॉग्स यहाँ पे 2 जगह इस्तेमाल हुए, इनका डिफरेंस आप हाईलाइट करें. इनका डिफरेंस क्या है? द फूड स्टॉल वॉज डैमेज एंड द हॉट डॉग्स वर स्कैटर्ड. ये क्या है बेटा? ये ईटेबल्स है, सॉसेजेस की तरह होते हैं, बन के अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है? ये आपके सॉसेज रोल्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उन हॉट डॉग की बात हो रही है, ठीक है? और जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो ये था कि 2 हॉट डॉग्स वर लाइंग अंडर द ट्री. हॉट डॉग्स ये बाकायदा आपके वो कुत्ते हैं जो गर्मी से बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज एक्सट्रीम समर्स एंड दीज आर एक्चुअली द कुत्ते
who are feeling very hot because of the extreme heat. टास्क 2 आपसे कह रहा था कि लेजेंड और लेग एंड, इनका डिफरेंस आपने बताना है. लेजेंड का उन्होंने बताया हुआ है. लेजेंड है लाइफ टाइम अचीवमेंट. व्हेन यू आर अलाइव एंड यू हैव रीच्ड द हाईएस्ट स्टेटस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड, दैट इज व्हेन यू आर बीइंग कॉल्ड एज अ लेजेंड. और ये है बेटा लेग एंड. दैट वाज द एंड ऑफ हिज ओन लेग एंड द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल लेग. ठीक है, उसकी अपनी जो लेग थी जो इंजर हो गई थी वो उसका एंड था और जो आर्टिफिशियल लेग थी उसकी बिगिनिंग थी. ये टास्क 2 था आपका. आपको ये डिस्क्राइब करना था, मैंने कर दिया. टास्क 3 ये था कि आपसे ये पूछा गया था कि वो क्या है जिसको उन्होंने एज अ हाइड डिनोट किया है. गैरेज में स्वॉलोज ने रूस्ट करना था, नेस्ट करना था. वहां पर मैट और ऑली ने एक सीक्रेट हाइड बनाई थी. वो क्या है? वो एक सीक्रेट लुकआउट है. ठीक है, और उस हाइट तक पहुंचने के लिए मैट ने एक लेडर बनाई थी विद ब्रॉडर स्टेप्स. क्यों वो लेडर ब्रॉडर स्टेप्स के साथ बनाई गई थी? बिकॉज मैट हैड एन आर्टिफिशियल लेग. He could not climb up the narrow steps. ठीक है, वो जो narrow steps थे उनके ऊपर comfortably climb नहीं कर रहा था. अभी वो उस leg के साथ adjust हो रहा था. That is why in order to move comfortably with his peg, he had made up a ladder with broader steps. अब उन्होंने आपसे कहा है कि टू हाइट को, यानी ये जो इसका पार्टिसिपल फॉर्म है, इसको सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करें, इसको सेंटेंस में यूज करें. तो आई ट्राइड टू हाइड माई सरप्राइज बट आई कुड नॉट आफ्टर आई सॉ माई न्यू आईपैड. राइट, उसके बाद हाइड दो तरह से यूज हो सकता है. एज अ नाउन आपने उनकी मीनिंग लिखनी है और उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं. एक नाउन तो है कैमोफ्लेज शेल्टर फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वो हाइड जो शिकारी या पोचर्स बनाते हैं दरख्त पे. कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि इस तरह से छुपा हुआ कि सराउंडिंग्स में आपको बिल्कुल नजर ना आए कि चीज छुपी हुई है. ठीक है, और दूसरी हाइड होती है स्किन. एज अ नाउन हम हाइड को अगर यूज करें, एज अ वर्ब नहीं, ये नाउन. ठीक है, मैट sat in his hide and waited for the swallows to build up their nests. ठीक है, hide as a skin. ठीक है, the butcher took off the hide in one piece. ठीक है, दोनों की मैंने आपको मीनिंग्स दे दी, सेंटेंसेस बना दिए. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा था कि what does these words from the text mean and you have to use them in your sentences. पहला वर्ड है आपका ब्लैक ह्यूमर. ब्लैक ह्यूमर किस सेंस में यूज हुआ है? ब्लैक ह्यूमर यूज हुआ है जब वो ये बता रहे हैं टू मेक अ सीरियस कंडीशन लाइट. मैट यूज्ड black humor to take his mind off from his misery, to take his mind off from his loss. ठीक है, तो ये हुआ ब्लैक ह्यूमर. अवर्टेड का मतलब है टर्न अवे. आई अवर्टेड माई आईज एज सून एज आई वॉज caught looking into the camera. राइट, मेटिकुलस मिरेकल ऑफ अ नेस्ट. मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड, मिरेकल मतलब मोजज़ा. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एक swallow to build up such a huge complete nest? They would go and come, bring things and then make a beautiful nest, right? So meticulous miracle of a nest, the nest that is so detailed, so diligently, so meticulously made, is the meticulous miracle of a nest. Matt was overwhelmed when he saw the eggs hatching in the meticulous miracle of a nest made by the swallows. Next is pirouetting. Pirouetting क्या है? Full turn of the body. जब आप ऐसे खड़े होके पूरा टर्न लेते हो ना 180 डिग्रीज का अपनी बॉडी का, तो that is pirouetting. ठीक है, Olly pirouetted in happiness as she saw Matt fully recovered and walking on his 2 feet without any help. क्विक रिकैपिटुलेशन कर लें आज के लेसन की. व्हाट डिड वी डू? वी डिड डियर ऑली द कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 8 फ्रॉम फैमिली फीलिंग्स ऑफ योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव रीडर. हमने कॉम्प्रिहेंशन को
तमाम डिटेल में समझा, उसकी रीडिंग फॉर इन्फरेंस के सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, उसकी वोकैबुलरी की, उसकी हमने राइटिंग स्किल्स किए, ठीक है, और उसके जितने टास्क थे सब थरली कर लिए। आई होप आप सब उसको कॉपी में कर लोगे, आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं कुछ आया समझ में तो कमेंट्स में शेयर करो, मैं दोबारा आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, राइट। हंसते रहो, खेलते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखो, और बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ। अल्लाह हाफिज।